Hi, today we'll start about how to find square root of a perfect square without actual calculation. Before I start the topic, I want you to see the symmetry in the squares of the 10 digits we have 0 to 9. 0 square is 0, 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16 likewise. So 0 is the only number whose square ends with 0 and 5 is the only number whose square ends with 5. Rest, we can say there are always two options, like if you want to check the number at the ones place is 1, it will have two options, 1 and 9. And there are two numbers who have digit 4 at ones place in squares, 2 and 8. Then there is 3 and 7 who have 9 at their ones place. Then we have 4 and 6 which have 6 at their ones place. Also we need to learn the square of the number which ends with 5. Like suppose if you want to calculate the square of 15, so that you need to do is 5 square 25 and here 1 with extra digit multiplication, 1 into 2. 1 into 2 is 25, that's the square of 15 whole. And then 25 whole square will be likewise 5 square 25, and here I shall be writing 2 into 3, the digit at tens place multiplied by one digit greater than that. 2 into 3, 6. 35 square will be 25. 3 into 4, 3 into 4 will sit here, that is 12. Here it will be 2 into 3 and 5 square. Here it will be 1 into 2 and 5 square. So this is a pattern of a number that ends with 5 and you are finding the square of that number, that will be 4 into 5, 20, 25. So this you need to understand the pattern of squares of the numbers that ends with 5, and this symmetry I have discussed. Like now if you want to find out the square root of 256, the simplest I'm taking first. Suppose we need to find out this. So in the digit last two digits we'll check the digit at ones place. The digit at ones place is 6. So there are two options which will give me the digit 6 at ones place is either 6 or 4. So either the answer will have 4 at ones place or 6 at one place. We'll figure out this in a moment. And now cancel these two and we are left with 2. Now we need to search in these numbers whose square is less than 2. The number whose square is less than 2 is 1. So it will be 1 over here. Tens place 1 hoga. Fourth place we are not sure, it's ones place we are not sure, it's 4 or 6. So the answer is either 14 or 16, right? Now we'll calculate the number 15. We know the 15 square is 225 and 225 is less than this. 225 is 15 square is 225 and 225 is less than this. So this cannot be the square root of 14. Therefore the answer is 16. Right? I hope it's clear. Let's discuss another example. Suppose we need to find square root of 441.
first we'll check out the last two digits, and the digit at ones place will give me the idea. Either the answer is having 1 or 9 at ones place. So these two digits got cancelled. Rest I need to think which is the number whose square is either 4 or less than 4. So it's 2 whose square is 4. So it will be giving us the digit at tens place, that is 2. So my answer is either 21 or 29. Right, now I'll check for 25. 25 square is, I've already told you the method to find 25 square, that is 625. Now 625 is greater than this. 625 is greater than this. So this number should be of less than 25. Square root for this number will be less than 25. So answer of this will be 21. Right? In a similar way, I can check any number. Now let's suppose the number is 7921, whose square root we need to find out. So first I will see the last two digits. This will suggest me the answer of the square root is having either 1 or 9 at ones place. So these last two digits have been given thought about. The next 79, whose square is either 79 or less than 79, we need to discuss. So it's, I guess, 8 square is 64. We cannot take 9, as 9 square is 81, which is more than 79. We need to take the number less than. So it's 8 at the tens place. So answer is either 81 or 89. Now we'll check about 85. 85 square is 5 square 25, and here will sit 8 into 9. It's 72. So 7225 is less than 7921. So this cannot give the answer 81. This has to be 89. So therefore square root of 7921 is 89. See, right? तो अब ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिसमें द नंबर whose square we need to find out, the number ends at 0 or the number ends at 5. So these numbers have only one answer. Means आंसर तो सबका ही एक है, लेकिन हम जब कैलकुलेशंस के बिना जब ये स्क्वायर रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हमेशा हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं जिसमें से हम एक चूज़ करते हैं, लेकिन इनमें ऑप्शंस नहीं आती हैं. इनमें हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है. जैसे 1600 है तो 1600 के लिए 00 जो है, सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर एंड्स एट 0. सो और कोई दो ऑप्शन नहीं है, जैसे पिछले एग्जांपल्स में दो ऑप्शंस आ रही थी. ऐसे 16 जो है वो 4 के स्क्वायर से आता है. सो द आंसर फॉर दिस नंबर इज़ 40. नो अदर ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर वी गेट. लाइकवाइज 4225 का आप सोचेंगे. 25 के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज़ 5, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर एंड्स एट 5. राइट. और 42 के बारे में सोचेंगे. 42 के लिए आपने ये सोचना है, ये थॉट देनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 42 से लेस है या 42 के इक्वल है. तो 6 आप देखेंगे कि 6 का स्क्वायर एक 36 आता है एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49. तो वो नंबर 36 है जो 42 से लेस है. तो 6 विल बी द better suitable option for this. So answer will be 65. So these are easy. The numbers which ends at 0 and the ends at 5 and we need to find the square root, these are easy. So एक example लेंगे बाकी digits का एक और. Suppose next digit number जो हम लेते हैं that is 24336. तो इसका स्क्वायर रूट जैसे हमें निकालना है तो आप पहले ये सोचेंगे 24336 में
जो आंसर आने वाला है उसका वंस प्लेस आपको ये 2 डिजिट्स देते हैं और रेस्ट आपको ये देते हैं। तो वंस प्लेस का आइडिया आपको ये डिजिट देता है। 6 से मुझे ये आइडिया होता है कि या तो मेरा आंसर विल एंड एट 4 और 6, राइट, कि 4 का स्क्वायर gives 6 at one's place, 6 का स्क्वायर gives 6 at one place. So these are the two options for me. नेक्स्ट 243 का आप सोचेंगे 243 जैसे 15 का स्क्वायर हम अगर फाइंड करें तो 15 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 1 इंटू 2 आपका 225 होता है। 225 इज़ द नंबर विच इज़ लेस देन 243। तो यहाँ हमें वो नंबर बिठाना होता है जिसका स्क्वायर इससे लेस है या इसके बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होगा ये 15। तो आंसर जो है इसका स्क्वायर रूट जो हम ढूंढ रहे हैं दैट विल बी ईदर 154 और 156। तो इनके बीच में जो नंबर लाई करता है विच एंड्स एट 5 इज़ 155। तो कोई भी जो दो आपके पास ऑप्शन आती हैं उनके बीच में, इनके बीच में तो एक ही डिजिट है जिसका जो 155 है। कोई भी डिफरेंट दायरा हो सकता है, जैसे 151 आ रहा है और एक 159 आ रहा है, तो उनके बीच में भी आप 155 ही सोचेंगे। तो सेंट्रल आपको ये सोचना होता है ऐसा नंबर पकड़े जिसके एंड्स जो यूनिट प्लेस पे जिसका 5 है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना हमें आता है। उसका स्क्वायर निकालने पे आपको ये पता चलेगा कि इसका आंसर आने वाला है 25, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बैठता है 15 इंटू द नेक्स्ट डिजिट 16। 15 इंटू 16 विल बी 240। तो अब इस नंबर के बारे में आप सोचें इसके साथ, ये नंबर इससे छोटा है, दिस नंबर इज़ स्मॉलर देन दिस, सो दिस कैन नॉट गिव द आंसर 154, क्योंकि इसके बाद 155 का आंसर इससे छोटा नहीं हो सकता। सो इसलिए द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 156, right? Hope this clear. Similarly, we have tricks for finding cube roots also in a similar manner that I can take in next video.